light on a plane surface. A ray of light falling on a surface is called the incident ray, and the ray of light reflected off is called the reflected ray. O is the point where the single ray of light strikes and gets reflected. It is called point of incidence of the ray. In the figure, AO is incident ray, OB is reflected ray, and ON is the normal drawn perpendicular to the surface at the point of incidence. The angle made by the incident ray is called the angle of incidence. The angle made by reflected ray is called the angle of reflection. So, hello and very good morning, students. Welcome to Gyanmajari Vidyapith Mahuva online digital platform. So, as you know, I am your science teacher Vatsal Trivedi. और स्टार्टिंग में जो हमने एक वीडियो देखा उसके अंदर हमने देखा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमारा आज का टॉपिक है, उसको समझने के लिए जो बेसिक नॉलेज आपको चाहिए थी वो थ्रू दिस वीडियो मैंने आपको दिखाया था. सो आज ये वीडियो के अंदर हमने देखा कि व्हाट इज द इंसिडेंट ऑफ द एंगल, व्हाट इज द इंसिडेंट ऑफ द रिफ्लेक्शन. सो इंसिडेंट एंगल आई, रिफ्लेक्टेड एंगल आर. सो सारी चीज हमने देखी, ए ओ ओ बी. ओके, तो जो फिगर हमने देखी थी उसके अंदर भी यही चीज हमको सिखा रहे थे. सो इन द वीडियो हमने एक देखा था ओ एन, यानी कि नॉर्मल रे, जो जहाँ पे इंसिडेंट एंगल इंसिडेंट होता है. ओके, कोई भी लाइट जब लाइट रे कोई किसी भी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होगा, यहाँ पे एक मिरर के ऊपर हो रहा था जिसको पॉइंट ओ हमने दिखाया था, तो वो पॉइंट से हम कोई ऐसी लाइन कंसीडर करें जो उसकी परपेंडिकुलर हमको मिल रही हो, यानी कि सेंटर में अभी हमको मिल रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है विद द प्लेन सरफेस. सो वो जो है उसको हमने नॉर्मल रे बोला था. देन जहां से ए टू ओ तक का जो एरिया था उसको हमने रिफ्लेक्शन सॉरी इंसिडेंट एंगल आई, और जो ओ टू बी तक का जो डिस्टेंस था, जो रे हमको मिला था, उसको हमने बोला था द इंसिडेंट सॉरी द रिफ्लेक्टेड एंगल आर. ओके, तो जहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल मिल रहा है वो जो रे उसको हम क्या बोलेंगे, रे ऑफ रिफ्लेक्शन. और जो जहाँ पे हमको एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी कि आई मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, वो रे को, दिस पर्टिकुलर रे इज कॉल्ड रे ऑफ इंसिडेंट. तो वही चीज हम आज देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. First of all, there is one activity. So please do this activity at your home. Paste a white sheet paper on the cardboard. Now draw a line AB like this. You can see in your video on the white sheet as shown in the figure. Now mark point O at the center of line. Okay. Then draw a normal point O परपेंडिकुलर, यानी कि एट द रेट 90 डिग्री, यानी कि बीच में. सो टी जैसा शेप आपको मिलेगा ऑन 90 डिग्री टू द लाइन ए बी. तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या किया. फर्स्ट हमने लाइन ड्रॉ करके उसका सेंटर क्लिक किया. देन आफ्टर उसमें से हमने परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री जो यहाँ पे एंगल मिल रहा है उस तरह से हमने ये वाली फिगर ड्रॉ की है, तो जिसको हमको नाम देना है एन. सो नाउ यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड ड्रॉ द इंसिडेंट रे at the angle of 30 degree from the normal. This is the angle of incident. So वहां पे हमको 30 डिग्री तक कुछ प्रोटेक्टर की मदद से एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट. Using the glue stick, a mirror and the eraser, and the place on it line AB. AB के ऊपर हमको एक ग्लू स्टिक से एक मिरर इस तरह से आपको रखना है.
with reflective surface facing on the incident ray and the normal ray. तो वहां पे आप देखोगे तो फिक्स 2 points on इंसिडेंट रे and mark at the points as a P and Q. ओके, तो वो हमने मार्क कर दी है. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो लुक एट द रिफ्लेक्शन ऑफ द पिंस, रिफ्लेक्शन ऑफ द पिंस, उसके आप पिन देखेंगे इन द मिरर. To see the correctly, the bring your eye level is of a mirror. Fix two new pins R and S on the other side of the normal to represent the reflected image is first 2 points. Now remove the pins RS and draw the line passing through the points RS and represented reflected ray. तो हमको वहाँ पे उसकी reflected ray भी यहाँ पे हमको मिल रहा है. So it is also in the same angle. Using the protector, measure the angle between the normal and the reflected ray. This is angle of reflection. Check if the value is same as the angle of incident. दोनों की value same आएगी 30 degree. So as per the conclusion, हम अगर देखें, so here through this activity as an observation and conclusion, what was the value of the angle and of reflection when the angle incident was 30? So answer आएगा same because दोनों value same रहेगी. So answer is 13. What was the value of angle of reflection when the angle of incidence was 60? So अगर 60 है तो answer आएगा ही 60. What a conclusion you can draw from this activity? So ये आपको आपकी तरफ से just लिखना है कि as per the activity we know that the angle of reflection or angle of incident is remains same. If it is a 30 degree, so 30 degree of is incident angle, so the reflected angle is a 30. If the incident angle is a 60, so reflected angle is also 60. That means all in any angle which are incident angle is sorry at any point the incident angle or reflected angle will same. So it is a law of reflection. So first laws of reflection is from the activity we can conclude that the angle of incident equal to the angle of reflection. This is the first law of reflection, यानी कि angle of I is equal to angle of R. So दोनों की वैल्यू हमको सेम मिलेगी. अगर ये 30 डिग्री हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल है वो भी हमको सेम मिलेगा. So angle of reflection remains same. Now look at the activity sheet. Do the incident ray, the reflected ray and the normal ray line on the sheet. So as per the second law we can also conclude that the incident ray or reflected ray and normal ray lie on the same plane, यानी कि flat surface के ऊपर same plane के अंदर ही हमको मिलेंगी. It is a second law of reflection. So incident ray, normal ray or reflected ray both so all are in a same plane. So now check for the understanding. A ray of light incident on the plane mirror and the angle of incident is a 67. So what is the angle of reflection? So answer is angle of reflection will be same because of angle of incident is equal to angle of reflection. So now let's solve practice question number 15 on your supplementary book. So please open your supplementary book page number 50 SB supplementary book के अंदर जो 15.1 है वो आप ओपन कीजिए. Label the incident ray and the reflected ray and the normal ray and the angle of incident and angle of reflection in the given diagram. सब कुछ आपको ये आपको एक डायग्राम आपकी SB बुक के अंदर दिया है. So you have to write these all of लेवल. सो फर्स्ट हमने लिखा है एंगल ऑफ इंसिडेंट हम किसको कहेंगे. सो यू हैव से दैट इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट. नाउ द नेक्स्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन.
the opposite side, it is a angle of reflection. Now next, ये जो रे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये रे को हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो हमारी रे है उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, और जो रिमेनिंग है यानी कि जो बीच में है उसको हम बोलेंगे नॉर्मल रे. सो आपको ये सारी चीज लिख देनी है. इट इज ऑल्सो इन योर होमवर्क. सो सभी क्वेश्चन जो वीडियो के अंदर हम कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क लिखने हैं इन योर फेयर बुक. नेक्स्ट, अ रे लाइट is incident on a plane mirror and the angle of incident is at 20. What is the angle of reflection? So we have a angle of incident is a 20 degrees. So we have the law of reflection. What is the first law? Angle of incident is equal to angle of incident is equal to angle of reflection. So both is, if we have a 20 degree as an incident angle, so the reflected angle will remain same. So if the angle of incident is a 20 degree, then the angle of reflection is also be 20 degree. So now watch the another concept of the light. It is a refraction. Okay, so ये क्या होता है वो हम देखेंगे through this video. So ध्यान से ये video देखना. Then after we will solve regarding the solve some practice question regarding this video. Refraction of light. Here is a pencil placed in a glass tumbler. Now, watch carefully as we start filling this tumbler with water. Do you see a change in how the pencil looks? You can perform this activity at your home also. The lower half of the pencil that is in water looks like it has shifted slightly when you compare it with the rest of the pencil that is in the air. Do not let your eyes fool you. This is just refraction at play. Let us understand refraction in more detail. From earlier classes, we know that light travels along a straight line. However, this happens only when light is traveling in the same medium, like air or water, or no medium at all, that is, in a vacuum. When light travels from one medium to another, it changes its direction and shifts away from its initial path. Here in video ऐसा बोलना चाहते हैं कि लाइट अगर एक ही मीडियम के अंदर पास हो सकती है. यहाँ पे फर्स्ट मीडियम कौन सा है, एयर, और सेकंड मीडियम है वाटर. तो यहाँ पे मीडियम दो हो गए, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में पास आउट नहीं होगी. सो यहाँ पे थोड़ा बहुत एंगल चेंज होगा जब वो दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करेगी. सो यू कैन सी हियर द एयर में, सन में से जो लाइट पास हो रही है वो स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, बट व्हेन इट्स come into second medium yani ki water, they are reflected at some angle, so it is called the refracted. Okay, so refraction. This change in the direction of light when it travels from one medium to another is called refraction. To understand this change in direction, we use a line of reference that tells us about the extent of change in the direction of light. This line of reference is called the normal, which is an imaginary line perpendicular to the surfaces of both media. When light travels from a rarer medium, that is a medium of lower density, to a denser medium, that is a medium of higher density, it shifts towards the normal. जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसको हम डेंसर मीडियम बोलेंगे, और जिसकी डेंसिटी कम होगी उसको हम बोलेंगे रेयर मीडियम. However, when light travels from a denser medium to a rarer medium, it moves away from the normal. Let us now look back at our example. We know that we are able to see the pencil because the rays of light reflect off the pencil and reach our eyes. In this case,
The light from the bottom half of the pencil first passes through the water and then through the air to reach our eyes. This is why the light does not reach us in a straight line. It changes its direction, which means that it refracts before it reaches our eyes, which makes us feel that the position of that part of the pencil has shifted or that the whole pencil is no longer straight. Of course, in reality, it is still the same. So, that is refraction for you. To summarize, refraction is the phenomenon of light deflecting or moving away from its path as it moves from one medium to another. When light travels from a rarer medium to a denser medium, it moves towards the normal. When light travels from a denser medium to a rarer medium, it moves away from the normal. So what is the reflection and what is the refraction? Both topics are here, we are understood. आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा. दो मीडियम है तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा. अगर सिंगल मीडियम है तो वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा. सो अभी हमको यही समझना है, जब हम पानी के ग्लास के अंदर पेंसिल डालते हैं तो पानी के ग्लास के अंदर वाटर भी है और एयर भी है. सो दैट्स व्हाई वी कैन सी द सम एंगल इन अ पेंसिल. सो इट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन. So now solve the practice question number 16.1 on your supplementary book. So when a ray of light passes from the air to water, it goes straight, bends towards at the normal and bends away from the normal or get reflected. Light कहाँ से आ रही है? Air to water जा रही है. So answer is the bends towards from the normal. तो अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब आएगा? जब वो पानी में से एयर की ओर अगर लाइट पास हो रही है तो वो नॉर्मल से अवे पास होगा. नेक्स्ट 16.2 व्हाई डज अ कॉइन कैप्ड इन अ बीकर ऑफ द वाटर अपीयर टू बी रेज्ड? So the rays carrying the information about the coin refract away from the normal as they leave the water enter in the air, making of image appear with a shallower depth than where the coin is actually located. So this is why the coin appears to be raised. आज के वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी प्रैक्टिस क्वेश्चन या जो कुछ भी एनसीईआरटी क्वेश्चन, जो कुछ भी यहाँ पे मैंने क्वेश्चनिंग आपके साथ सॉल्व किए, आपको मैंने लिखा है, सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं. जो भी आज हमने कॉन्सेप्ट टाइम चलाया है वो सारे आपको रीड करने हैं एज होमवर्क. और जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको डायरेक्टली फेयरबुक के अंदर लिख कर मुझे एज अ फोटोग्राफ एज अ सबमिट एज योर होमवर्क आपको फोटोग्राफ्स मुझे क्लिक करने हैं और सेंड करना है. देन कोई भी डाउट्स रह जाता है तो यू हैव टू आस्क एनी टाइम, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट. सो आज के लिए हम यहाँ तक रखेंगे. अभी के लिए स्टे होम. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. टेक केयर. फन विद साइंस. एंजॉय द साइंस.